Namaskar. Good afternoon. Ladies and gentlemen, it is indeed our honor and pleasure to welcome each one of you in the 17th Urban Mobility India Conference 2024, an annual flagship event of the Ministry of Housing and Urban Affairs, Government of India. The theme of this year's conference is Standardization and Optimization of Urban Transport Solutions. Our Honorable Chief Minister of Gujarat, Shri Bhupendra Bhai Patel, and the other dignitaries have arrived in this campus. We request you to kindly take up your seats, please. And those who have joined us late, kindly put your mobile phones on silent mode or vibrating mode. आप सभी से नम्र निवेदन है कि आप अपना मोबाइल फ़ोन साइलेंट मोड या वाइब्रेटिंग मोड पर रख दें. Please refrain from leaving from your seats during the session. आपातकालीन सिचुएशन के अलावा आप अपना स्थान ना छोड़ें. माननीय मुख्यमंत्री गुजरात श्री भूपेंद्र भाई पटेल और अन्य महानुभाव अभी जो हमारा 17th अर्बन मोबिलिटी इंडिया एग्जीबिशन 2024 है उसके उद्घाटन समारोह में पहुंचे हैं. वे कुछ ही क्षणों में यहाँ पर इस मंच पर उपस्थित रहेंगे. धन्यवाद. Okay. Ladies and gentlemen, a small note for all of you. When our Honorable Chief Minister Sir and other dignitaries arrive in the hall, we request you to kindly stand up and greet them. Thank you. Hello, sound check. 1, 2. Hello. All okay. Thank you.
Ladies and gentlemen, please help me welcome Shri Bhupendra Bhai Patel, Honorable Chief Minister of Gujarat State. We also welcome Shri Harsh Bhai Sanghvi, Honorable State Minister for Transport, Gujarat. Shri Rajkumar, Chief Secretary, Government of Gujarat. Shri Srinivas Katikitala, Secretary, Ministry of HUA. Shri S.S. Rathore, MD Gujarat Metro and PS Advisor to CM. Shri Ashwini Kumar, Principal Secretary, Urban Development, Government of Gujarat. And Shri Jaideep, Official Special Duty, Urban Transport, Mahua. आइए तालियों की गड़गड़ाहट के साथ फिर एक बार हम सभी महानुभावों का हृदयपूर्वक स्वागत करते हैं। धन्यवाद। At the very onset, I now request Honorable Chief Minister of Gujarat, Shri Bhupendra Bhai Patel and other dignitaries on the dais to kindly come forward and light the traditional lamp and inaugurate the significant conference. Thank you, everyone. And we seek the blessings of Almighty. We would now like to welcome the esteemed guests who have graced this important inaugural session. Foremost, would request Shri Srinivas Katikatala, Secretary Mahua, to welcome Honorable Chief Minister of Gujarat, Shri Bhupendra Bhai Patel. Thank you very much. Would now request Shri S.S. Rathore, MG Gujarat Metro and PS, Advisor to CM, to kindly welcome Shri Harsh Bhai Sanghvi, Honorable State Minister, Transport, Government of Gujarat. Thank you very much. And would now request Shri Jaideep to kindly welcome Shri Rajkumar, Chief Secretary of Gujarat. Thank you. May I now request Shri Srinivas Katikathala, Secretary Mahua, to commence the proceedings of the session and extend a formal welcome to the dignitaries. Honorable Shri Bhupendra Bhai Patel, Honorable Chief Minister of Gujarat, Honorable Shri Harsh Bhai Sanghvi ji, Honorable Minister of State for Home and Transport, Honorable Chief Secretary Shri Rajkumar ji, my senior colleague Shri S.S. Rathore, MD of the Gujarat Metro and Principal Advisor to the Honorable Chief Minister, Shri Ashwini Kumar ji, my colleague and Principal Secretary of the Urban Development Department of Gujarat, Central, State and Union Territory officials, Municipal Commissioners, Managing Directors from various metro rail companies, my colleagues from the Ministry, distinguished guests from India and abroad, ladies and gentlemen. It gives me immense pleasure to welcome you all to the 17th Urban Mobility India Conference
and Exhibition 2024, being organized by the Ministry of Housing and Urban Affairs, Government of India, along with the Gujarat government from 25th to 27th October 2024. We are deeply indebted to the Honorable Chief Minister of Gujarat, officials and experts from the various national and international organizations, Honorable Home Minister of Gujarat, and all the senior colleagues who have graciously taken time out from their busy schedules and who are with us today to participate in the inaugural session of this conference and the other sessions to follow. This conference is being held in Gujarat, sir, for the second time. It was previously held at the same venue in 2016. Starting from 2008, this flagship event has developed and gained significance in accordance with the National Urban Transport Policy 2006. It is a recognized international level forum for sharing, disseminating knowledge on best practices in urban mobility, both nationally and globally, and to deliberate on the intricate problems, challenges involved, and the way forward. During the course of the next 3 days, esteemed delegates and mobility experts will have the opportunity to discuss, deliberate, and come out with appropriate recommendations on the various sessions to be covered under the overall theme of standardization and optimization of urban transport solutions. It will go a long way in shaping the vision, policies, planning, and the strategies needed to deliver high-class transport solutions for the rapidly growing urban transport population. As I mentioned earlier, the NUTP 2006 of the Government of India is the cornerstone of the UMI conference. It lays emphasis on developing and enhancing state and local capacity to handle issues related to urban transportation and take on the challenge of creating sustainable urban transportation systems. I'm happy to share that the country is witnessing widespread implementation of urban transport systems across the states and the cities with large-scale funding by the central government under various schemes. During this 3-day conference, we will be covering many themes and topics such as the city's perspective on urban transportation challenges, technical sessions such as integration of transport nodes, urban freight, ecosystem for e-buses, and so on and so forth. There will be 9 roundtable discussions sponsored by national and international organizations, 8 research symposiums where postgraduate and PhD students will be presenting their peer-reviewed papers. About 1,500 delegates, senior officers from central and state governments, mayors, professionals, experts, academicians, researchers, and stakeholders from India and abroad have registered their participation. A large exhibition has also been organized this year, exhibiting the products of 75 companies on the latest developments in metro rail and other transportation technology. During the valedictory session, on the concluding day, awards will be conferred on the best practice projects in selected categories recommended by a specially constituted award selection committee. The best practice projects are expected to encourage other states and cities to come forward and compete for recognition. With these words, I once again warmly welcome all of you, and I particularly thank the Honorable Chief Minister of Gujarat, the Honorable Home Minister of Gujarat, and my senior colleagues, Shri Rajkumar ji, and all the dignitaries of the dais, and being from Gujarat myself, who Manya Mukhyamantri Shri Gujarat Rajyane ખરેખર અંતઃકરણથી આભાર માનું છું. એ જ રીતે સંઘવી સાહેબનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. જય હિન્દ, જય ભારત, જય જય ગરવી ગુજરાત. Thank you very much, sir, for your warm welcome address and setting the tone of the conference. We appreciate you starting us off on such an optimistic note. I would now request Shri Rajkumar, Chief Secretary, Government of Gujarat, to deliver his address. Honorable Chief Minister of Gujarat, Shri Bhupendra Bhai Patel ji, Minister of State, Transport and Home, Shri Harsh Bhai Sanghvi ji, Secretary, Ministry of Housing and Urban Affairs, Government of India, Shri K. Srinivas ji, Managing Director, Gujarat Metro Rail Corporation Limited, Shri S.S. Rathore ji,
my colleague, Principal Secretary, Urban Development Department, Shri Ashwini Kumar, OSD, Shri Jaideep ji, esteemed delegates, mayors of various cities from across the country, distinguished guests, my colleagues and members of the industry, Namaskar and a very warm welcome to our vibrant state, Gujarat. I extend my heartfelt gratitude to Ministry of Housing and Urban Affairs for giving Gujarat an opportunity to host this prestigious conference, bringing together leading experts and stakeholders associated with transport sector from across the world. Our beloved Honorable Prime Minister is determined to ensure effective and futuristic urban planning as we grow in Amrit Kal. Honorable Prime Minister stated that transport planning is an important pillar for such development of our cities. Gatherings like these show our commitment to Honorable Prime Minister's vision for ideating, providing and evaluating policies to ensure standardization and optimization of urban transport solutions for growth of our cities. Today, we stand at the cusp of a transformational era in the country. Indian population is growing at the decadal rate of 17.7% as per the census of 2011, with India becoming the most populous nation on 18 January 2024. Further, by 2036, Indian towns and cities will be home to 600 million people, which will be roughly 40% of country's population. Urban areas will then be contributing almost 70% of country's GDP. Additionally, there is a clarion call to make India a developed nation by 2047 with the economic size of $30 trillion. Our urban areas will undoubtedly be the prime drivers of economic growth of our country. Urban transportation is the very backbone of our cities, directly influencing economic efficiency and well-being of our citizens. Millions of people move across cities, move from villages to cities daily to access opportunities and fuel India's growth. While there are opportunities, there are some challenges as well, which need immediate rectification. Indian cities are constantly being characterized by increasing levels of congestion, pollution, road fatalities, safety concerns, and inequitable access. Personalized transport modes account up to 70% in major cities, indicating limited dependency on public transport. This is not only causing concerns within the boundaries of our cities, but also larger issues related to climate change. It is critical to note that transport sector emissions in India contribute to 15% of total emissions in the country. The land transport alone contributes to about 70% of transport sector emissions. These numbers are worrisome, but what keeps me hopeful are the efforts that we are making. For example, the last decade has seen numerous impactful projects put in motion. Metro projects in over 20 cities, country's first bullet train corridor, promotion of sustainable transport through PM e-bus scheme, among several others. Further, policies like National Urban Transport Policy have time and again emphasized on moving people rather than vehicles. Committed to the vision of central government, Gujarat, as we know, is a shining example of growth and innovation. It has consistently been a hub for development, leading from the front in sectors like urban and logistics management. Gujarat also recently announced the Vikasit Gujarat 2047 with actionable reforms centered around the principles of living well, earning well, and thriving well. As part of this vision strategy, transport and logistics is identified as one of the key enablers while envisaging Gujarat as a leader in sustainable transport, prioritizing development of top-tier, inclusive public transport infrastructure, and ensuring highest standards of safety. As Gujarat continues to steadfastly progress towards its vision, I take this profound opportunity to highlight the state's efforts towards enabling safe, reliable, and affordable transportation system. Gujarat today is the best performing state in operationalizing bus rapid transport system. It is running successfully in 3 cities, namely Ahmedabad, Surat, and Rajkot, with a combined ridership of more than 300,000
passengers. Metro rail connectivity is also a priority for us. Metro rail system between Gandhinagar and Ahmedabad is already operational, and Surat Metro Rail Phase 1 is under construction. Similarly, CM Urban Bus Scheme, a novel initiative of state government, is supporting smaller cities with viability gap funding to make public transport projects viable. Around 1,000 buses are proposed under this project in smaller cities. State is also moving towards increased use of EV, electric vehicle. We are also developing plans to make public transportation on important arteries of cities sustainable and environmental friendly. Integrating different types of transport modes to provide seamless experience to the citizens is also important. In line with this, a master plan and automated system for integrating inter and intra-city transport modes in Ahmedabad is under planning stage. Gujarat cities are also leveraging technological advancements for improved mobility. For instance, the integrated transit management system in Surat city acts as a unified backbone for real-time monitoring of BRTS fleets, ensuring seamless movement. This innovative bus system adapts to cities' growing footfall through IoT, Internet of Things, and extensive data analytics. All our major cities have developed ring roads to ease the flow of traffic. Moreover, road connectivity is being strengthened further under Honorable Chief Minister's Urban Road Scheme. But this is not the end. I genuinely feel that we have just begun. Cities are growing so rapidly that we as policymakers continuously need to be literally on the move to optimize the current transportation system and plan for the future. I would like to tweak a common phrase: where there is a will, there is a way. There is a will to develop our cities as economic growth centers, and we will provide the mobility, that means way, to ensure this. Through this conference, I am optimistic that we will be able to develop practical, holistic solutions for urban mobility, and I look forward to fruitful discussions with you all. Thank you. Jai Hind, Jai Jai Garvi Gujarat. Thank you very much, sir, for your inspiring address. हमारे राज्य के विकास में युवा और ऊर्जावान नेतृत्व का विशेष योगदान रहा है और माननीय मंत्री महोदय श्री हर्ष भाई संघवी ने गुजरात के विकास में अनेक मानदंड स्थापित किए हैं। मैं आदरपूर्वक माननीय मंत्री श्री हर्ष भाई संघवी से उनके उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ। सत्तरवें अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस में हम सब के बीच उपस्थित गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी, श्री श्रीनिवास जी, राज्य के मुख्य सचिव श्री राजकुमार जी, एस राठौड़ जी, अश्विनी कुमार जी, श्री जयदीप जी एवं देश भर से पधारे हुए सभी डेलीगेट्स का मैं गुजरात की धरती पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन और प्रदर्शनी के उद्घाटन में मुख्यमंत्री जी ने ये एग्जीबिशन का जब लोकार्पण किया, ये एग्जीबिशन में स्टेट के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के तौर पे मेरा ये स्पष्ट मानना है कि सभी राज्यों ने अपनी गुड प्रैक्टिसेस को यहाँ पे कहीं ना कहीं डेमोस्ट्रेट किया है। हर राज्य ने कहीं ना कहीं अर्बन मोबिलिटी के लिए एक श्रेष्ठ प्रयास किया है और वो प्रयासों को यहाँ पे डेमोस्ट्रेट किया है। एज एन मिनिस्टर, एज एन सिटीजन ऑफ दिस स्टेट, ये एग्जीबिशन से आने वाले दिनों में कई जो निर्णय स्टेट के ट्रांसपोर्ट विभाग में लेने हैं, उसमें ज़रूर से ये एग्जीबिशन के माध्यम से और कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमें मार्गदर्शन भी मिलेगा और कुछ नई चीज़ें जो हमें यहाँ से सीखने मिलेगी उसको हम हमारे राज्य में ज़रूर से अप्लाई करने का प्रयास करेंगे। ये मंच केवल शहरों की वर्तमान चुनौतियां या विचार विमर्श करने का
अवसर प्रदान करते हैं, इतना ही नहीं बल्कि शहर परिवहन के भविष्य को लेकर हमें नई दिशाएं भी जरूर से प्राप्त होगी। हम सभी जानते हैं कि पिछले एक दशक में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में देश भर में अर्बन मोबिलिटी ने एक नई दिशा प्राप्त की है और सही तौर पे पिछले एक दशक में अर्बन मोबिलिटी सेक्टर में बहुत ही बड़ा बदलाव भी आया है और एग्जीक्यूशन भी देश भर के टायर 1, टायर 2 सिटीज़ में हमें स्पष्ट नज़र आ रहा है। ठीक उसी तरह से गुजरात में भी अर्बन मोबिलिटी की दिशा में गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल के मार्गदर्शन में सभी विभागों ने साथ में मिलकर एक बड़ा बदलाव प्राप्त किया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल के मार्गदर्शन में हम लोग SSS के फॉर्मूला से गुजरात में अर्बन मोबिलिटी एवं ट्रांसपोर्ट विभाग में काम कर रहे हैं। खास तौर पे सस्टेनेबल, सेंसिटिव एंड इंक्लूसिव और स्मार्ट तरीके से अर्बन मोबिलिटी को आगे बढ़ा रहे हैं। आज जब डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी मिशन, आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत जैसी पहल कर रहे, शहरी परिवहन को इनका मजबूत आधार बनाना ये अनिवार्य है। हमारे शहरों में ऐसी प्रणाली की आवश्यकता है जो सभी वर्गों के लिए समान रूप से उपलब्ध हो और पर्यावरण रूप से भी अनुकूल हो। स्मार्ट सिटी टेक्नोलॉजी का समावेश गुजरात में खास तौर पे हमें ये समझना होगा कि बिना तकनीकी विकास के हम शहरी परिवहन में सुधार की कल्पना नहीं कर सकते। आज IT, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिसिस जैसी तकनीकों से शहरी परिवहन को अधिक स्मार्ट, सुरक्षित और सहज बना सकती है। हम पहले से ही कुछ शहरों में स्मार्ट कार्ड, रियल टाइम ट्रैकिंग और डिजिटल पेमेंट सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं। अब समय है कि इन सभी सुविधाओं को और व्यापक रूप से आगे बढ़ाना है। मैं बीच में सोशल मीडिया में जब ट्विटर पे स्क्रॉल कर रहा था, एक बहुत ही सामान्य व्यक्ति ने एक बहुत ही अच्छे विचार रजू किए और वो विचार हमें क्या सुधार लाना है उसके लिए बहुत ही उपयोगी बना। वो व्यक्ति ने लिखा था कि सरकार एवं अन्य विभागों द्वारा अलग अलग प्रकार के मोबिलिटी के लिए कई कार्ड बनाए गए। जैसे BRTS है तो अलग है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अलग है, स्टेट गवर्नमेंट के अलग है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग है। वो एक सामान्य व्यक्ति का सुझाव था कि ये एक कार्ड देश भर के लिए क्यों ना हो सके। मोबिलिटी के लिए चाहे वो ट्रेन हो, चाहे वो लोकल बसेस हो, चाहे वो स्टेट ट्रांसपोर्टेशन की बसेस हो, वो सभी के अंदर, चाहे वो शेयरिंग साइकिल हो, सबके अंदर एक कार्ड क्यों ना बन सके। और ये विचारों पे हम आने वाले दिनों में स्टेट ट्रांसपोर्टेशन में ये काम आगे बढ़ाया है। और आज ही मुझे पता चला कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार द्वारा भी ये विषय में काम हो रहा है, मेरा ये मानना है कि ये अति आवश्यक है। हम तो जरूर से मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार जब ये एक कार्ड के मॉडल पे आगे बढ़ रही है, हम तो जरूर से उसमें भाग लेंगे। सभी राज्यों को इसके बारे में कुछ ना कुछ सोचना चाहिए जिससे लोगों की व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव आ सकता है। सार्वजनिक परिवहन का पूर्ण विकास ये बहुत ही आवश्यक है। हमें निजी वाहनों की निर्भरता कम करके जनता को अधिक सुविधाजनक और सार्वजनिक परिवहन सेवाओं उपलब्ध करवानी होगी। हमने देखा है कि जिस प्रकार से टायर 2 सिटीज़ में भी मोदी जी के मार्गदर्शन में देश भर में मेट्रो का विकास हो रहा है, उसमें गुजरात भी बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, बहुत ही क्विक मूवमेंट पे उसका काम चल रहा है। अहमदाबाद में मेट्रो में 1 लाख से ज़्यादा पैसेंजर्स हर रोज़ ट्रैवल करते हैं। गांधीनगर में कुछ दिन पहले ही मेट्रो का लोकार्पण किया है, उसमें 30,000 से ज़्यादा लोग इसका उपयोग करते हैं। आज गिफ्ट सिटी में महत्तम लोग मेट्रो का उपयोग करने लगे। ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छी दिशा में मेट्रो की शुरुआत हुई है। आने वाले दिनों में सूरत शहर में भी मेट्रो की शुरुआत होगी। अर्बन मोबिलिटी में खास तौर पे हम लोग एंड टू एंड कनेक्टिविटी में प्राधान्य दे रहे हैं। एंड टू एंड कनेक्टिविटी में जिस प्रकार से अर्बन डिपार्टमेंट द्वारा अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में एक छोटा सा जो ट्रायल किया है, BRTS से उतरने वाले लोगों को, छोटी सी गलियों में रहने वाले आम नागरिकों को
बीआरटीएस से उतरते ही उनको ऑटो रिक्शा, टू व्हीलर्स कैसे मिले, वो उनके एप्लीकेशंस में आने वाले दिनों में जो ऐड कर रहे हैं, वो एंड टू एंड कनेक्टिविटी में एक बहुत ही उत्तम उदाहरण आने वाले दिनों में साबित होने वाला है। इसी प्रकार से स्टेट ट्रांसपोर्टेशन में हमने हमारा आस्था का बहुत ही बड़ा केंद्र है, जैसे सोमनाथ में लोकल बसेस से जब स्टेट ट्रांसपोर्टेशन की बस से जब उतरेंगे लोग, बस स्टेशन से ही उन्हें ऑनलाइन सेम ही एप्लीकेशन से उन्हें टू व्हीलर, फोर व्हीलर और ऑटो रिक्शा ऑनलाइन बुक हो पाए, इस प्रकार का प्रावधान आने वाले दिनों में हम लोग चालू करने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से एंड टू एंड कनेक्टिविटी को हम आगे बढ़ा पाए। आज की दुनिया में जब हम जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण को एक गंभीर परिणामों का सामना कर रहे हैं, तो परिवहन के क्षेत्र में ग्रीन मोबिलिटी पर ध्यान देने की समय की मांग है। इलेक्ट्रॉनिक वाहन है, सोलर है, अन्य नवीनीकरण और ऊर्जा स्रोत का आधारित परिवहन को हम बढ़ोतरा दे रहे हैं, और इसी क्षेत्र में मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए हैं, जैसे कि 1068 जितनी सीएनजी बसेस ऑलरेडी गुजरात में आज अलग अलग शहरों में दौड़ रही है, 382 जितनी इलेक्ट्रिक बसेस जो अर्बन एरिया में है, उसके अलावा स्टेट ट्रांसपोर्टेशन की बसेस अलग ये तैनात कर ली गई है, और मुख्यमंत्री जी ने और 1759 से अधिक बसों की स्वीकृति की है जो सीएनजी और इलेक्ट्रिक बसेस हैं, जो आने वाले दिनों में शहरों में जो डीजल से बसेस चल रही है उसको हटा के सीएनजी और ये ई बसेस को आगे बढ़ा रहे हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय मुख्यमंत्री जी ने लिया है। गुजरात में खास तौर पे मैं अर्बन डिपार्टमेंट का बहुत बहुत आभारी हूँ, और मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में मात्र ई बसेस, अर्बन मोबिलिटी, मेट्रो, इस पे ही हम काम नहीं कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि लोग आने वाले दिनों में साइकिल ट्रैक का महत्तम उपयोग करें। लोग साइकिल ट्रैक का कब उपयोग करेंगे? क्यों मात्र मॉर्निंग एक्सरसाइज के लिए ही साइकिलिंग का उपयोग हो? हमने धीरे धीरे करके डस्ट फ्री रोड्स बनाने का एक संकल्प हाथ में लिया, और सूरत और अहमदाबाद में कई रोड्स आज डस्ट फ्री रोड के तौर पे जाने जा रहे हैं। वहाँ पे 100% डस्ट फ्री बनाने में अर्बन डिपार्टमेंट को सफलता प्राप्त हुई। वहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि कई प्रतिशत बढ़ोतरी साइकिलिंग एवं वॉकिंग की बढ़ी है, जो मॉर्निंग में है, लेकिन शेयरिंग साइकिल के ये प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग लगातार प्रयास करते हैं, और ख़ास ये प्रयास को सफलता कब प्राप्त हो पाएगी? हम सब कहीं ना कहीं अर्बन डिपार्टमेंट, अर्बन मोबिलिटी से जुड़े हुए लोग हो यहाँ पे, तो कभी भी अगर सामान्य व्यक्ति अगर डस्ट फ्री रोड्स नहीं होंगे तो वो जरूर से साइकिल पे प्रवास दिन के टाइम पे नहीं कर पाएंगे। तो हमें जब साइकिलिंग को अगर बढ़ोतरी देनी है तो हमें जरूर से वो रोड्स को भी इस प्रकार का बनाना पड़ेगा, जिसके माध्यम से लोग धीरे धीरे साइकिलिंग एवं वॉकिंग का उपयोग करने लगे। मैंने देखा है कि कई लोग ये रास्ते पे जो कॉमर्शियल एरिया है, जो रेसिडेंशियल एरिया भी साथ में है, आधे किलोमीटर 1 किलोमीटर का रास्ता है, जैसे सूरत के सूरत डुमस रोड है या जीडी गोइंग का रोड है, ये 100% डस्ट फ्री होने के बाद कई लोग आधे किलोमीटर में जिनकी ऑफिसेज है, जिनका दफ्तर है, वो लोग चलते चलते ऑफिस से घर और घर से ऑफिस आने जाने लगे, जो अपने आप में सबसे बड़ी सफलता है। और ये सफलता को हम आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, जिसमें अर्बन डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, सभी डिपार्टमेंट को साथ में रख के मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में ये काम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। इसी प्रकार से बुलेट ट्रेन जो हम हमेशा अवसर विदेश की धरती पे देख के जरूर से हर व्यक्ति के मन में ये सपना होगा कि कब बुलेट ट्रेन भारत देश में दौड़ेगी। यहाँ पे मुंबई में जितने लोग रहते होंगे वो जरूर से ये जानते होंगे कि मलाबार हिल से अगर बोरीवली जाने में जितना टाइम लगता है, उतने टाइम में मुंबई से बैठोगे तो आप आने वाले दिनों में अहमदाबाद तक पहुँचोगे। और उसमें स्टेट गवर्नमेंट के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को मैं अभिनंदन देता हूँ, और ये राज्य के नागरिक के तौर पर आभार भी मानता हूँ कि बुलेट ट्रेन के लिए लैंड की व्यवस्था हो या प्रोजेक्ट को स्मूथली चल पाए उसकी व्यवस्था हो, उसमें सबसे बेहतरीन काम गुजरात स्टेट ने किया, और सबसे फास्टेस्ट काम करने में गुजरात स्टेट को सफलता मिली है, जिसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने रात दिन मेहनत की है। उसके लिए भी मैं उनको अभिनंदन देता हूं, और मैं आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। और ये अर्बन मोबिलिटी विषय में स्टेट गवर्नमेंट बहुत ही सिंसियरली और सीरियसली ये विषय में हर नए आयामों को हासिल करने के लिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का उपयोग करें, उसके लिए
स्टेट गवर्नमेंट सीरियसली काम कर रही है और ये विषय में हम गुजरात भले सभी दिशाओं में हर एक उपलब्धि जरूर से प्राप्त की हो, लेकिन हम कभी भी ये ईगो से काम करने वाले लोग नहीं। हम जहाँ जाते हैं वहाँ कुछ नया सीखते हैं, नया सीख के उस चीज़ को एग्जीक्यूट करने का प्रयास करते हैं। ये कॉन्फ्रेंस से भी, ये एग्जीबिशन से भी हम कुछ नया सीखेंगे, नया सीख के स्टेट के लोगों के लिए एग्जीक्यूट करेंगे और सही तौर में कॉन्फ्रेंस का जो अलग अलग जो आइडिया शेयरिंग है उसका उपयोग करेंगे। आप सबका फिर से एक बार गुजरात की धरती पे मैं स्वागत भी करता हूं और आभार मानता हूं। आभार। माननीय मंत्री श्री, आपके प्रोत्साहनपूर्ण संबोधन के लिए और आपकी उपस्थिति के लिए हम भी आपका धन्यवाद करते हैं। As cities grow, efficient urban transport is essential for sustainable development. The UMI 2024 conference focuses on creating standardized and optimized solutions for better connectivity and accessibility for the citizens of the country. I now request the Honorable Chief Minister, sir, to kindly launch the inaugural video of UMI 2024 titled Standardization and Optimization of Urban Transport Solutions. Urban mobility is the backbone of India's rapid urbanization, shaping the way we live, work and connect. This year's UMI conference focuses on the theme of standardization and optimization in urban mobility, highlighting their crucial role in transforming India's transport landscape. Standardization promotes public transport systems like metros, buses, and non-motorized options such as walking and cycling, aiming to reduce reliance on private vehicles, lowering fuel consumption and curb pollution. Optimization ensures the efficient use of existing infrastructure, maximizing its potential for seamless transit across cities. These strategies are essential for creating sustainable, efficient, and environmentally friendly urban transport solutions that can meet the growing demand of India's rapidly urbanizing cities. Under the leadership of our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi, India is witnessing the launch of landmark projects that have revolutionized urban mobility. From state-of-the-art metro stations to new-age rail networks and public bus fleets. Today, India boasts an extensive metro network spanning over 989 kilometers across 23 cities. Transit-oriented development is transforming India's urban landscape by reducing congestion, cutting travel times, and bringing essential services closer to people's homes. Aligned with Make in India, iconic trains like Namo Bharat and Vande Bharat are now being developed within the country, symbolizing India's push for self-reliance and world-class manufacturing in the mobility sector. The government's PM e-bus Seva is accelerating the adoption of electric buses across India, reducing emissions and improving last-mile connectivity. Urban centers are being developed around multimodal integration, with hubs enabling seamless transitions between different modes of transport. These hubs are creating self-contained cities where jobs, homes, and schools are easily accessible. The RRTS Delhi-Meerut corridor is a game-changer in regional connectivity, covering 82 kilometers and serving thousands of passengers daily. The National Common Mobility Card truly is a game-changer for public transport in India. By offering seamless integration across metro, bus, and regional transport networks, it simplifies travel for commuters. The Government of India's urban transport vision prioritizes sustainability, focusing on eco-friendly systems to ensure a green and prosperous future.
Gujarat has led the way in shaping urban transport across India, delivering innovative projects that serve as national templates. Over the last decade, the Ahmedabad and Surat BRTS has further enhanced mobility, while Vadodara Smart City project has introduced intelligent traffic systems. This year, at the 17th UMI conference, India's commitment to standardized and optimized transport solutions is driving a transformative shift in urban mobility. Experts, environmentalists, and policymakers are uniting to develop streamlined and efficient solutions that will revolutionize urban transport, making it cleaner, more accessible, and sustainable for the entire nation. Thank you. We now have few publications to be released. I would request Honorable Chief Minister to release the publication and the dignitaries to join. The first is the guidebook on safe routes to school prepared by GIZ, and second is Living Lab Methodology Toolkit prepared by GIZ. The Safe Routes to School program aims to create safer, walkable and bike-friendly school precincts, fostering sustainable mobility habits among children. The Living Lab Methodology Toolkit provides comprehensive guidance for understanding, establishing and scaling living labs in urban mobility across India. Thank you very much, gentlemen. We now have a newsletter prepared by GIZ, the Green Urban Mobility Partnership. Would request Honorable CM Sir to kindly inaugurate the same and the dignitaries to also do the honors. The newsletter is on the Green Urban Mobility Partnership, is a testament to the strong collaboration between India and Germany in the mobility sector. Congratulations. One more publication to be released, which is on strengthening India's urban transport governance through a state unified transport authority, report by CEEW. It is for the Cleaner Air and Better Health project proposes the creation of a state-level urban transport nodal agency with legal powers to influence decisions, ensure policy-driven governance, and control investments to rethink and revitalize urban transport planning in India. Thank you very much for doing the honors. शहरी परिवहन के क्षेत्र में हो रहे विकास और मानकीकरण के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल की दूरदर्शी नीतियों ने अहम भूमिका निभाई है। उनके नेतृत्व में राज्य ने इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जो हमारे शहरों को अधिक सुलभ और निरंतर विकास की ओर ले जा रहे हैं। मैं आदरपूर्वक माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल से निवेदन करती हूं कि वे अपने संबोधन से सभी को मार्गदर्शित करें। केंद्र सरकार के आवासन और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित 17वीं अर्बन मोबिलिटी इंडियन कॉन्फ्रेंस कम एक्सपो के उद्घाटन सत्र में हमारे बीच उपस्थित मेरे साथी मंत्री श्री हर्षभाई संघवी, केंद्रीय सचिव श्री श्रीनिवासन जी, हमारे मुख्य सचिव श्री राजकुमार जी, गुजरात मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री एस राठौड़, विभाग के ओएसडी श्री जयदीप जी, राज्य सरकार के अग्र सचिव श्री अश्विनी कुमार, आमंत्रित विभिन्न राज्यों के अधिकारीगण, उपस्थित सभी परिवहन एवं उद्योग क्षेत्र से जुड़े हुए महानुभाव, प्रेस मीडिया के मित्र, आप सभी को मेरा नमस्कार। देश के
यशस्वी प्रधानमंत्री और वैश्विक नेता आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में आयोजित अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस में मैं आप सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में भारत आज विश्व की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है। देश के इस उपलब्धि में पिछले 10 सालों में हुए सामाजिक आर्थिक विकास और शहरीकरण का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। प्रधानमंत्री जी ने शहरीकरण को एक चुनौती के रूप में न लेते हुए उसे अवसर बनाया और हमारे शहरों अधिक उपयोगी, सस्टेनेबल और लिवेबल बनाया है। हमारे शहर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी वाले हो, अर्बन मोबिलिटी सुगम और लास्ट माइल कनेक्टिविटी हो, शहरों में लोगों के लिए ईज़ ऑफ लिविंग बढ़े, ये शहरीकरण को लेकर प्रधानमंत्री जी के मूल सिद्धांत रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में अर्बन मोबिलिटी सेक्टर में राज्यों में हुए डेवलपमेंट और अनुभव को एक दूसरे के साथ साझा करने में यह अर्बन मोबिलिटी इंडियन कॉन्फ्रेंस उपयोगी बनेगा। गुजरात का तो यह सौभाग्य रहा है कि पिछले 23 सालों से प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में राज्य के शहरों का विकास हो रहा है। श्री नरेंद्र भाई हमेशा समय से 2 कदम आगे रहते हैं। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने अपने प्रयासों से गुजरात के शहरी विकास को भी समय से 2 कदम आगे ले जाते हुए शहरी विकास क्षेत्र को एक नया आयाम दिया है। प्रधानमंत्री जी ने यह सुनिश्चित किया है कि विकास कार्यों के लिए पैसों की कमी कभी न हो। शहरी विकास के लिए एक बड़े बजट की ज़रूरत होती है और इसलिए श्री नरेंद्र भाई ने शहरी विकास के बजट को बढ़ाने में विशेष ध्यान दिया है। आज से 23 साल पहले गुजरात का शहरी विकास का बजट 750 करोड़ रुपया था, आज बढ़कर 21,000 करोड़ रुपया तक पहुंच गया है। शहरी विकास के लिए अपनी इस प्रतिबद्धता के साथ नरेंद्र भाई ने वर्ष 2005 को शहरी विकास वर्ष के रूप में मनाया। इस पूरे साल राज्य भर में कई बड़े अर्बन डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स लागू करने का अभियान चलाया। 2010 में गुजरात की स्थापना के 50 साल पूरे होने के अवसर पर शहरों को हॉलिस्टिक और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए उन्होंने राज्य के फंड से स्वर्णिम जयंती मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना शुरू की। यदि कोई व्यक्ति विकास के लिए समर्पित हो और उसके पास अपना विज़न हो तो स्थिति को कैसे बदला जा सकता है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण नरेंद्र भाई है। अहमदाबाद में बना साबरमती रिवरफ्रंट उनके ही इस विज़न की दृष्टि का एक उत्तम उदाहरण है। अहमदाबाद का यह रिवरफ्रंट मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर और सिटी ब्यूटिफिकेशन के साथ साथ अर्बन मोबिलिटी के लिए भी बहुत ही खास है। आज यह रिवरफ्रंट केवल देश की ही नहीं बल्कि विश्व की भी अपनी विशेष पहचान रखता है। शहरों में बसे लोगों को ट्रैफिक की वजह से कोई स्ट्रेस न हो, एक्सीडेंट का कोई खतरा न हो और दैनिक परिवहन सरल हो, इसका भी श्री नरेंद्र भाई ने विशेष ध्यान रखा है। इसके लिए उन्होंने गुजरात में सबसे पहले अहमदाबाद में BRTS शुरू की और ये स्टेप गुजरात के अर्बन मोबिलिटी के लिए गेम चेंजर साबित हुआ है। आज राज्य के अन्य बड़े शहरों को भी BRTS का लाभ मिल रहा है। शहरों के पार्किंग की समस्या भी एक बड़ी चुनौती रहती है। इसके समाधान के लिए हमने अपने बड़े शहरों में मल्टी लेवल पार्किंग की सुविधा दी है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हाल ही में हम अहमदाबाद में
लोगों को मल्टी लेवल पार्किंग से अपने गंतव्य स्थान तक जाने के लिए फीडर ट्रांसपोर्टेशन की भी शुरुआत की है। हमारा ये कदम भी अर्बन मोबिलिटी के लिए एक बड़ा सीमा चिन्ह है। इसी तरह गुजरात में मेट्रो सेवा शुरू होने से अर्बन मोबिलिटी को एक नया आयाम मिला है। आज मेट्रो हमारे अहमदाबाद के लाखों लोगों की लाइफलाइन बन गया है। प्रधानमंत्री जी के विकास कार्यों के लिए पर्यावरण केंद्रित अभिगम को प्राथमिकता दी है और 2070 तक भारत को नेट जीरो कार्बन कंट्री बनाने का लक्ष्य हमें दिया है। इसे हासिल करने की दिशा में गुजरात के क्लीन एंड ग्रीन अर्बन मोबिलिटी के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन को प्राथमिकता देते हुए मुख्यमंत्री शहरी बस परिवहन योजना के तहत हमने पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में इलेक्ट्रिक बस और सीएनजी बसों का उपयोग को बढ़ावा दिया है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार ने भी देश में पीएम ई बस सेवा पीपीपी मॉडल द्वारा शुरू की है। अर्बन मोबिलिटी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ग्रीन क्लीन फ्यूअल हमारी प्रतिबद्धता है। प्रधानमंत्री जी के 2047 तक विकसित भारत का निर्धार किया है। मुझे विश्वास है कि हम सभी साथ मिलकर अपने साझा प्रयासों से इस निर्धार को पूरा करेंगे। आज का ये अर्बन मोबिलिटी इंडियन कॉन्फ्रेंस विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में एक बड़ा प्रयास साबित होगा। इसी अपेक्षा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय जय गरवी गुजरात। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम आपके मार्गदर्शक विचारों के लिए हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आपकी उपस्थिति और इस सम्मेलन और प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के लिए हम आपके अत्यंत आभारी हैं। एक बार फिर से आपका हार्दिक धन्यवाद। To conclude the inaugural session, I now request Shri Ashwini Kumar, Principal Secretary, Urban Development, Government of Gujarat, to propose a formal vote of thanks to the conference gathering. अर्बन मोबिलिटी इंडिया के 17वें संस्करण के त्रिदिवसीय कॉन्फ्रेंस एवं एक्सपो के उद्घाटन सत्र में आप सभी महानुभावों का आभार ज्ञापन करने के लिए मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। इस श्रृंखला में सर्वप्रथम मैं गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी का आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने आज इस कार्यक्रम में उपस्थित रहकर अपने प्रेरणादायी वचनों से हमारा मार्गदर्शन किया है। मैं राज्य के युवा, गृह, खेलकूद, संस्कृति एवं परिवहन मंत्री माननीय श्री हर्ष संघवी जी का विशेष आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस सत्र की गरिमा बढ़ाई। गुजरात के कर्तव्यनिष्ठ मुख्य सचिव श्री राजकुमार जी और हमारे राज्य के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी श्री श्रीनिवास जी, जो अभी भारत सरकार में आवासन एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव के रूप में कार्यरत हैं, उनका भी मैं हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। मंचस्थ श्री एस राठौड़ जी एवं श्री जयदीप जी सहित पूरे देश और विदेश से पधारे हुए मेट्रो के वरिष्ठ पदाधिकारीगण, नगर आयुक्त, विषय के विशेषज्ञों, प्रेस मीडिया व्यवस्था से जुड़े सभी साथियों का मैं हृदयपूर्वक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं अंत में भारत सरकार और शहरी विकास मंत्रालय का ऋणी हूं कि जिन्होंने गुजरात को इस गरिमामयी कार्यक्रम के आयोजन का अवसर प्रदान किया। पुनः आप सबका हार्दिक आभार। धन्यवाद। आपके ऊष्मापूर्ण आभार विधि के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। Thanks, sir, for extending a warm thank you note. Finally, we extend our heartfelt gratitude to all the distinguished guests, honored dignitaries, and our revered audience for setting the context for the next 3-day deliberations. With your thoughtful views and intriguing perspectives as guiding light, we wish everyone partaking in the conference the very best and eagerly look forward to its productive and fulfilling outcome. Thank you once again, Honorable Chief Minister, sir, Honorable Minister, sir, and all the esteemed dignitaries. We request the august audience to kindly join us for the lunch at the exhibition hall number 1. And for the VVIPs, please join us in the food court.